Bismillahirrahmanirrahim. Beta, today topic is the neurulation and the ectodermal derivatives. At the end of the lecture, you should know the definition of neurulation and steps of formation of the neural tube, derivatives of the neural tube, and derivative of neural crest cells, derivative of surface ectoderm, and the effects of the neural tube, and how we can prevent these defects of neural tube, and some features of the fourth week of development, main events which occurs in. As you know, this diagram, this is the surface ectoderm and this is the intraembryonic mesoderm, and this yellow color structure shows the endoderm. This is the notocard जो हमने कल पढ़ा था. The notocard, the surface ectoderm, in front of it, this notocard, the notocard stimulates this ectoderm and induces the induction of neurulation. So it is the function of the notocard to induce the formation of neural tube. If notocard fails to form, then neurulation will not occur. So this is one of the most important function of the notocard to induction of the neurulation. Okay, this ectoderm becomes thick, and first of all it will form the neural plate. The first step in formation of neurulation is the formation of notocard, then neural plate. This neural plate becomes deepened in next diagram, and it is going to convert into a neural groove. Here the neural groove becomes deepened. Lastly, they becomes fused. It comes from right side and left side. They comes in the midline and will become fused. Then neural tube will form. Now this is the structure. This is cranial end. This is the caudal end. And from midline you can see the midline dorsally they starts to fuse. Neural tube starts to fuse. And now how you can see that this is the neural tube, anterior neuropore, this is the posterior neuropore. The anterior neuropore closes first at the 25th day of the development, and the posterior neuropore closes at the 27th, or which some books write that the 28th day of the development. Normally they should close it at their time. So during the process of gestation, the cells that remain in epiblast form the ectodermal germ form the ectodermal germ layer. जो हमने पिछली मरतबा पढ़ा था कि epiblast से क्या बनी, ectodermal layer बनी. The central region of this layer along with the embryonic axis differentiate into the neural plate, and in the third month and fourth week of the gestation, during the third and fourth week of the gestation, the edges of this plate begins to elevate and form the neural fold. जो मैंने आपको पहले बताया कि पहले neural plate बनी, फिर neural groove बनेगी, फिर उसमें neural folds जो उसके ऊपर वाला हिस्सा. The folds roll up into a tube fusing in the midline dorsally. Closure of the folds begin in cervical region initially, क्योंकि मैंने कहा था anterior neuropole पहले close होता है. ठीक है. ठीक. The completion of the closure proceed at the end of the fourth week of the gestation. Mean by 28th day में इसको normally close हो जाना चाहिए. The entire process of the fold formation, elevation and closure is called the neurulation. ये definition पूछते हैं आस्पिन. ठीक है. So the neurulation is processed whereby the neural plate forms the neural tube by the end of the third week. The lateral edges of the neural plate becomes elevated to form the neural fold and depress in the mid region and form the neural groove. Gradually the neural folds approaches with each other in the midline and fused. ये वही सारा है anterior neuropore और posterior neuropore कैसे close हो रहा है. और पहले कहाँ close होगा, cranially, and then caudal part will become caudally, the posterior neuropore will closes. So now you can see this diagram. This is the neural plate. इसमें नहीं दिखाई क्योंकि neural plate ये वाली है. पहला step neural notocard formation, then second will be the
neural plate formation, then the neural groove formation of neural groove. This is called the crest. These edges are called the crest, and the cells present in this site are called the neural crest cells. When the neural tube becomes separate from the surface ectoderm and it becomes a complete tube, these crest cells slip from this site and goes to different parts for the formation of the different structures of our body. As for example, if they passes into the dermis of the skin, epidermis of the skin, and they form here they form the melanocytes, and they can pass to the adrenal gland where they form the medulla of the adrenal gland. They can pass to the face and form the facial bones and skeleton, and they can form these sensory ganglia of the sympathetic. So you should know the derivatives of these neural crestals, which is very, very, very important for the point of view of examination. So these are these light color cells are the neural crestals, and they will go shift to different parts. These are showing that they are shifting of here they form the pre-aortic ganglion. So the closure of the एंटीरियर न्यूरोपोर मैंने आपको बता दिया, ये 25 ये सोमाइट्स वाला नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा ये सोमाइट्स क्या है, लेकिन मैंने इसमें लिख दिया है क्योंकि अक्सर ये 25th डे के बदले सोमाइट्स का नंबर पूछ लेते हैं. न्यूरुलेशन इज देन कंप्लीट हो जाती, एंड देन यू कैन सी इन द सेफेलिक रीजन द some after formation of the neural tube, the dilatation will occur and brain parts of the brain, the caudal portion of the neural tube will form the spinal cord, while the upper portion form the different parts of the brain. The neural crest cells from the elevated fold. When the elevated fold fuses, the neural crest cells migrate from this neuroectoderm and begins to dissociate from their neighbors. This cell population, the neural crest, will undergo an epithelial to mesenchymal transition. Epithelial mean epithelial structure भी बनाते हैं और mesenchymal structures भी जो मेसोडर्म से बनता है. ठीक है, लीज करके डिफरेंट अंडर द मेसोडर्म के अंदर डिफरेंट जगह पे चला जाता है. तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स फ्रॉम द ट्रंक रीजन, कौन से, क्योंकि ये फ्यूज तो पूरी ट्यूब हर जगह से हो रही है ना, तो जो उसकी ट्रंक वाला रीजन है, ये न्यूरोएक्टोडर्म से लीव करके जब जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, a dorsal pathway through the dermis में गए, where they will enter the ectoderm through the holes in the basal lamina and forms the melanocytes in the skin and hair follicle. इसका मतलब है melanocytes और skin and hair follicles are the derivatives of the neural crest cells. और जब ये ventral pathway में जाते हैं, a ventral pathway through the anterior half of each somoid to become sensory ganglia. वहाँ क्या बनाएंगे, sensory ganglia, sympathetic and the entire enteric mean GIT न्यूरॉन्स. GIT के अंदर जब आप पढ़ोगे सेकेंड ईयर में तो उसमें न्यूरॉन्स होते हैं सेकेंड श्वान सेल्स एंड द एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल ग्लैंड में दो होते हैं, कॉर्टेक्स भी होता है, मेडुला भी होता है. कॉर्टेक्स डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म व्हाइल द एड्रिनल मेडुला डेवलप फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. और न्यूरल क्रेस्ट सेल खुद कहाँ से बने, एक्टोडर्म से. ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आल्सो फॉर्म एंड माइग्रेट फ्रॉम द क्रेनियल न्यूरोफोल्ड लीविंग द न्यूरल ट्यूब बिफोर क्लोजर इन दिस रीजन. फिर ये फेस में जाएंगे, क्रेनियोफेशियल स्केलेटन बनाया, ठीक है, फिर क्रेनियल गैंग्लिया बनाया, ग्लायल सेल्स बनाया, मेलानोसाइट्स एंड अदर टाइप ऑफ द सेल्स. इसमें ये शिफ्टिंग दिखाई है, दिस इज द न्यूरल ट्यूब, ये ग्रे कलर का जो है. फिर इसमें ये शिफ्टिंग एरो से दिखाई है कि यहाँ पे ये हेड और नेक रीजन है. यहाँ पे न्यूरल ट्यूब न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की माइग्रेशन दिखाई है कि हेड और नेक रीजन में जाते हैं, और यहाँ पे ये फेस की और नेक में फेस की स्केलेटन और नेक में बहुत सारे जो नर्व्स हैं उनकी गैंग्लिया बनाती है. ठीक है, तो ये लिस्ट बहुत अहम है, इसमें आपको आना चाहिए कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की डेरिवेटिव्स क्या क्या होती है. ये ऑस्पी में भी पूछते हैं, इसमें बीसी में से भी लाजमी क्वेश्चन आता है.